Hello students, myself Dr. L.K. Sinha with new topic, and today topic is reproduction in fungi. In previous video we has already read about characteristic features of fungi. Now we know different method of reproduction in fungi. Okay, fungi reproduces by vegetative, asexual and sexual reproduction. Reproduces by vegetative, asexual and sexual. In vegetative reproduction, vegetative or somatic part of body separates and forms new livings. Vegetative reproduction in fungi occurs by fragmentation, budding, by sclerotia and with the help of rhizomorph. These are the three methods of vegetative reproduction present in fungi. Asexual reproduction occurs by formation of spores, and sexual with the help of sex organs or gametangia. In other words, we can say that sexual reproduction occurs by fusion of gametes or cells that acts as gametes called gametangia. Okay, so first we know vegetative methods. Fragmentation. First method of vegetative reproduction is fragmentation. Fragment means a small piece. Fragment means piece. It means the hyphae of fungi breaks into a small parts by any reason and each part forms new livings. Okay, in fragmentation, the filamentous body of fungi means hyphae or mycelium breaks down into a small pieces, and that also transfer dispersed with water, air from one place to another place, and in suitable condition each piece germinates and forms new fungi. So this method is called fragmentation. Okay, second method of vegetative production is budding. Budding process, budding occurs in
unicellular fungi occurs in unicellular fungi. An example of unicellular fungi is yeast, also called Saccharomyces. Okay, so in yeast or Saccharomyces, the production, vegetative production occurs by budding. Suppose that this is yeast, nucleus cytoplasm. In suitable condition, favorable condition, a small bud is develops. This is called bud. Okay, and bud detached from mother body and forms new yeast. In some cases, group of buds are also formed. This line. And group of bud is called torula. Torula. Okay. And due to formation of torula, budding is also called torulation. Budding is also called torulation. Okay. Next method of vegetative production is Sclerotia. Third, Sclerotia. It is formed in unfavorable condition. स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. सपोज दैट दिस इज द माइसेलियम ग्रुप ऑफ हाइफी इन अनफेवरेबल कंडीशन. इट इज सराउंडेड बाई ए हार्ड कवरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्लेरोटिया. जब तक फेवरेबल कंडीशन है, सॉरी अनफेवरेबल कंडीशन है, तब तक यह प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद है. एंड इन फेवरेबल कंडीशन इट germinates and forms new fungi. Okay, this method is called Sclerotia. Generally, Sclerotia is compact hyphae or mycelium surrounded by hard protective covering. Okay, and next method is rhizomorph. Rhizo means root, morph means form. Simply, rhizomorph is root-like structure. Rhizomorph is root-like structure. Root, rope or cord-like subterranean structure formed during a scarcity of
फूड एंड वाटर। अगर फूड और वाटर का स्कार्सिटी होता है तो माइसेलियम का कुछ हाइफी ग्राउंड के नीचे, सबटेरेनियन ग्राउंड के नीचे चला जाता है और अंदर ही अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहता है। जैसे ही सुटेबल कंडीशन आता है, राइजोफॉर्म जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स न्यू माइसेलियम। ओके, सो इन सुटेबल कंडीशन rhizomorph germinates and forms new mycelium. Okay, so these are the different methods of vegetative reproduction that occurs in fungi. Next is asexual reproduction. Asexual reproduction occurs by formation of spores. Asexual reproduction occurs by a spore, and in fungi different types of spores are produced, such as zoospore, sporangiospore, akinete. These are the different types of spores produced in fungi. Okay, so first type of spore is sporangiospore. First is sporangiospore. Sporangiospore is non-motile and non-flagellated spore. In favorable condition, suppose that this is mycelium, group of hyphae. In suitable condition, in presence of proper food, moisture and other conditions, some hyphae grow upwards and forms a sac-like structure. Grow upwards and forms sac-like structure. This sac-like structure is called a sporangia. And inside the sporangia, spores are present or formed, and the hyphae that bears a sporangia is called a sporangiophore. Okay, so a sporangiospore is produced in a sporangia. It is non-motile spore, and when the wall of a sporangia breaks down, a spore emerges out and germinates in suitable condition. Simply, अगर हम घर में
आप लोग देखते होंगे लोग कहते हैं गीले हाथ से अचार को नहीं छूना चाहिए। कारण क्या है? कारण है अचार छूने से खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब है उस पर कुछ ना कुछ फंजाई डेवलप हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का फाइब्रस स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और वह क्या है? वह फंजाई है। इट मीन्स इन पिकल्स, इन अचार, स्पोर्स ऑफ फंजाई आर प्रेजेंट। उसको बनाने के क्रम में, प्रोसेसिंग के क्रम में कुछ न कुछ स्पोर वहां चला गया है, लेकिन जब तक वो उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है वह जर्मिनेट नहीं करेगा, इनएक्टिव स्टेज में पड़ा हुआ है। और जैसे ही मॉइस्ट स्पून, अगर वाटर का कांटेक्ट वहां गया तो वाटर उसके लिए सुटेबल कंडीशन है, और उस सुटेबल कंडीशन में डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा, नया माइसेलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो यह है स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, नेक्स्ट इज जूस्पोर। जूस्पोर इज मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर। Develops in aquatic form. Develops in aquatic form. Example: Saprolegnia. This is aquatic fungi in which flagellated motile spores are formed. Zoospore develops in a sac-like structure called zoosporangia. इसका नाम देंगे जूस्पोरेंजिया। जूस्पोर may be uniflagellate or biflagellate. Okay, with the help of flagella it moves from one place to another place, and in favorable condition zoospore germinates and forms new mycelium or fungi. Okay, next, third is conidia. Conidia develops exogenously. यह फिलामेंट या हाइफी के बाहर की तरफ बनता है, इसलिए कहते हैं इसको एक्सोजीनियसली इन चेन. सपोज दैट दिस इज हाइफी, some hyphae grow upwards and forms numerous spores, this like. These are called conidia, and the hyphae that bears conidia is called conidiophore. This conidia transfer from one place to another place by air and other means, and in favorable condition it germinates and forms new mycelium So this is called conidia. And next spore is chlamydospore. Next spore is chlamydospore.
Chlamydospore. It is hyphal cell having a stored food and surrounded by hard covering. क्लेमाइडोस्पोर में जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, इन अनफेवरेबल कंडीशन, सपोज दैट दिस इज hyphae. You know hyphae is multicellular structure. Sorry, this like hyphae. In unfavorable condition, in adverse condition, some cell in which a stored food is present that is surrounded by a hard covering, this like called क्लेमाइडोस्पोर. अब है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो हाइफी का सारा सेल डाई कर गया ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वह जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके न्यू माइसेलियम का फॉर्मेशन करता है. तो ये हो गया क्लेमाइडोस्पोर. एक क्लेमाइडोस्पोर. नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय fusion of gamete and the structure in which gamete is formed, that is called gametangia. Gamete, a structure in which gamete is formed called gametangia. Is called gametangia. In fungi, sexual reproduction completes in 3 phases. Sexual reproduction completes in 3 phases. First, plasmogamy. Second, karyogamy. And third, meiosis. These are the 3 stages of sexual reproduction. Okay. Plasmogamy. Gamy means fusion. Gamy means fusion. Plasmo, cytoplasm. Karyogamy. Karyo means nucleus, fusion of nucleus. And last, meiosis. Okay. First, see, suppose that these are 2 cells. Comes in contact to each other. Okay. And by dissolving the connecting wall, these 2 cells are fused together. In this condition, cytoplasm of 2 cells are fused, but nucleus is not fused. And inside a cell, 2 nucleus are present. 2 nucleus are present. And this stage is called dikaryon. This stage is called
डाइकैरियोन. Di means two, carrion means nucleus. A stage in which two nuclei are present, that is called dikaryon. Okay. In Ascomycete, in some group of fungi, dikaryon stage is very short time, very short. It means after plasmogamy, karyogamy takes place, fusion of two nuclei takes place. But in some other group of fungi, Basidiomycetes, okay, Ascomycetes, in Ascomycetes, in Basidiomycetes, dikaryophase is long stage. कुछ समय तक डाइकैरियोफेज पड़ा रहता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज करता है. ठीक है ना. तो ये हो गया डाइकैरियोफेज फर्स्ट स्टेज. कैरियोफेज मीन्स फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई. It means after dikaryophase, both nuclei fuse together. Okay, and this is called dikaryophase. Dikaryophase. This stage is called dikaryophase, and fused nucleus is called synkaryon. Fused nucleus, syn means fusion, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस का फ्यूज फॉर्म नाम हम क्या देंगे, सिनकैरियोन. और जब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा तभी तक उसका नाम देंगे डाइकैरियोफेज. जब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा सिनकैरियोफेज. ऐसे यहां कर सकते हैं हम सिनकैरियोफेज. सिनकैरियोफेज आफ्टर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई. ओके, एंड सिनकैरियोफेज इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई. दो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है. इसका मतलब है कि सिनकैरियोन डिप्लॉयड फेज है. सो आफ्टर दैट meiosis occurs, and in meiosis synkaryon converts into haploid nuclei. यह फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में. एंड ईच हैप्लॉयड न्यूक्लियाई डेवलप्स, germinates and forms new mycelium. Okay, now there are different methods to fusion of two cells or plasmogamy. दो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, आने के बाद वह फ्यूज करता है, उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, बाद में न्यूक्लियस फ्यूज करता है. तो दोनों की दूसरे के कांटेक्ट पे आने और फ्यूज करने का भी एक से अधिक मेथड्स है. तो उसका मेथड को देखें हम. देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट, गैमीटेंजियल contact. Second, gamitangial copulation. And third, somatogamy. These are the three methods through which two cells of fungi fuse together, comes in contact to each other and fuse together, in which first of all plasmogamy takes place, after that karyogamy occurs, and after karyogamy meiosis division takes place. Okay, so first is gamitangial contact. First, gamitangial contact. Okay, in this method two sex organs, male and female sex organs, are developed on same mycelium but in different hyphae. Sex organ develops in different hyphae of same mycelium. एक माइसेलियम में बहुत सारा हाइफी होता है,
तो उसमें से दो अलग अलग हाइफी पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा। माइसेलियम सेम होगा, हाइफी अलग अलग होगा, तो हम उसको कहते हैं डिफरेंट हाइफी पर होगा। अब देखिए, सपोज दैट हाइफी, एक हाइफी इधर है, एक हाइफी इधर है, दो हाइफी, एक हाइफी पर मेल, दूसरे हाइफी पर फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल reproductive organ is called antheridium and female is called oogonium. Now दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ओके, आफ्टर प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी occurs and due to कैरियोगैमी synkaryon stage develops. Synkaryon divides by meiosis and forms a spore. A spore germinates and forms mycelium. A spore germinates and forms mycelium. In figure, suppose that these are different hyphae. These are different hyphae. Sex organ develops. One is called male sex organ, other is called female sex organ. One is antheridia, other is called oogonia, and antheridia forms a tube like a structure, this like. Gametangial tube, and with the help of tube the nucleus and cytoplasm of antheridia transfer into oogonia. Okay, so one acts as male, other as female. Donor gametangia is called antheridium. जो देगा वह मेल की तरह बिहेव करेगा, एंथ्रीडियम कहलाएगा, और जो रिसीव करेगा वह ओगोनियम कहलाएगा। करेगा मेल, जो रिसीव करेगा फीमेल। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज, सेकेंड मेथड्स। गैमीटेंजियल copulation. Suppose that this is two hypha. In favorable condition, in suitable condition, hyphae produce a sac-like structure. This is called प्रोगैमीटेंजिया। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे? प्रोगैमीटेंजिया। इन प्रोगैमीटेंजिया सिंगल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एंड मेनी न्यूक्लियस इन hyphae, this line. After that, इसके अंदर हाइफी का बहुत सारा न्यूक्लियस आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड गैमीटेंजिया। अब इसका नाम क्या हो गया? गैमीटेंजिया। नाउ these two गैमीटेंजिया fuse together
and forms a single structure. This like by fusion of two gametangia, a multinucleated single structure is formed that is called zygospore. Zygospore. This is called zygospore. Okay. Now zygospore divides by meiosis and forms a spore. Before the meiosis, fusion of nucleus also occurs. So first karyogamy, then meiosis, then formation of a spore. A spore germinates and forms new mycelium. So this is gametangial copulation. And third method is somatogamy. Third is somatogamy. No any gametangia is formed. इसमें कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है. सिंपल एनी सेल और एनी सोमैटिक सेल ऑफ हाइफी फ्यूज टुगेदर. इन दिस मेथड एनी सोमैटिक सेल ऑफ हाइफी फ्यूज टुगेदर. फ्यूज कर जाएगा. पहले प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, और फिर कैरियोगैमी के बाद meiosis spore का formation. Okay, so these are the different methods of sexual reproduction, asexual reproduction and vegetative reproduction in fungi. In next video we will know about types of fungi: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Okay, thanks.